फिर यहाँ आ जाना। Hello, can you hear me? Hello. Yes, sir. Okay, so let us start without any uh, ado. So our subject, as you would know, is power system protection and switchgear. In fact, so no, I shall be basically using many of these slides that I have borrowed from Professor Soman from IIT Bombay. So the subject is power system protection. Uh, is the screen visible? Hello. Yes, sir. Visible है. ओके कोई क्या लिख रहा है? किसी ने कुछ कमेंट किया क्या? ओके अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल इफ कोई लैग होगा या समथिंग, प्लीज लेट मी नो. वो चैट बॉक्स में नहीं लिखना क्योंकि मैं नजर मेरी उसके ऊपर नहीं है. जस्ट आप अपनी वॉइस रेज करके मुझे बता देना, ठीक है? So let us look at the subject that we are trying to study here, that is power system protection. So let us start. First of all, what is an electrical system? You can call it an electrical energy system. We can also call it an electrical power system. Sometimes it's simply called as a power system because if you look at the name of the subject, it is power system protection. Power here obviously is electrical power, whereas ting kyun ho raha hai? Is someone writing anything? Okay, no. Okay. So what I was trying to say is that because we are going to study the protection of power systems, I will come to this point, rather this word in a minute. What is protection? What is the meaning of protection? First of all, what is a power system? Now it's it's rather simple. What is a power system? A power system is basically a system in which we have electrical energy generated at some kVs, which is then transmitted through AC and HVDC lines. It is further stepped down and distributed at load centers. So maybe I will try to allow some people here. Is this whiteboard visible? Hello? Yes, sir. Visible है. Okay. मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ, वो दिख रहा है आपको? जी सर. Okay. So power system. First of all, let's look at the first part of the subject, which is basically power system. पावर सिस्टम से क्या आपकी मुराद है? इट्स वेरी सिंपल. हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है जिसमें हमारे पास we have some devices which generate electrical power. This electrical power is then typically generated as AC. This is changing increasingly with the increasing usage of photovoltaic systems and all that. But even now, 90-95% of world power electrical generation is in the AC form. AC means alternating current. This in turn is then loaded over transformers and stepped up to a very high voltage. So typically the generators are comparatively low voltage equipment. Maybe the maximum voltage is say 25 kV, not more than that. The transmission voltages are much larger. So we can have 400 kV. Or we can have 765 kV. We can have 220 kV. And so on and so forth. This is the transmission part of the power system. Now a simple question, why do we generate power at comparatively low voltages? Look at 25 compared to 400, it's very small. And why do we transmit power at such high voltages? Can anyone answer that? Hello, am I audible? आवाज आ रही है जासिरा? हेलो? Okay, so my question is why हम जनरेट इसलिए हाई वोल्टेज पे क्योंकि हमें लॉसेस फिर कम हो जाते हैं हाई वोल्टेज पे. Your voice is breaking. आप फिर से एक बार रिपीट करो प्लीज.
हेलो जनरेशन हम जो में No, हाई वोल्टेज पे your लॉसेस कम voice, होता है हाई वोल्टेज पे voice quality is very poor. I'm not able to hear you. Jasira? सर बेसिकली हम इसलिए लो वोल्टेज पे जनरेट करते हैं क्योंकि अगर हम हाई वोल्टेज पे जनरेट करेंगे तो हमारा इंसुलेशन जो वो हमें ज्यादा जरूरत है, प्लस वी वुड रिक्वायर लार्जर इक्विपमेंट साइज. Yeah, so basically it is a problem of insulation and equipment size. Again, the question arises, why do we want to generate at very large voltages? For example, if आपने सही कहा कि अगर हम higher voltage पे generate करेंगे, then the size becomes unsustainable and then the cost of insulation also becomes unsustainable. It becomes very large. The question is, why would we even like to generate at high voltage? Why would we, for example, ideally speaking, like to generate at say 400 kV or something? उसका फायदा क्या है? Sir, for constant amount of power, if we have high voltage, our current reduces. Okay. So I square our loss reduces, and hence our system is more efficient at high voltages. Okay. In other words, if we are able to basically operate at high voltage, because power is equal to VI cos of phi for AC systems. As we can see, the current for a given power and a given power factor is inversely proportional to voltage. In other words, if the voltage is very large, to produce a given power, the current is very small. If the current is very small, the losses in the system, the I square R losses in the system are very small. So yeah, I would say it is an acceptable answer. So yeah, that is the reason why we would ideally like to. ये कहाँ से लाया? अब गई खुद ही वहाँ। विनिस्तान क्या जरूरत नहीं? पता नहीं क्या December 4. सर्टिफिकेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया? पता नहीं क्या क्यों नहीं किया। ये इनको वापस दे दो, इनको बोलो ये दे प्रॉपर्ली सर्कुलेट करें, ठीक है? बस फुली तो कहीं यार, तो मस्त कुछ होई तो मतलब मैं भी नया मत कुछ आया है, उनको मैं काम कर नहीं कर चुका हूँ, तो 10 वर्ष से। एसनिश क्या जाओ? नहीं, पापा मैंने एक को फोन किया। ना ये एसनिश क्या जाओ? ना इनको वापस दो, ऐसे हमको पता ही नहीं, हमको कोई रिकॉर्ड ही नहीं, ये गेम खाओ ना ऐसे ही, ऐसे कैसे? इनको बोलो ये विनिस्तान क्या जाओ? मैं खुद गई इसको मांगने के बजट है सलामत के, ये तो है, मैं स्पाई तो बजट हमें पता है कुछ नहीं आया है, क्या दलील छे ना ना ये क्या, ये आप इसको वापस दे दो, इसको बोलो एज ए रिटन एक्सप्लेनेशन विनिस्तान क्या जाओ ना, ऐसे क्या पाए? देखो इसमें वापस, ओके. Power is equal to मैं कह रहा था for a given power, if we increase the level of voltage, the current required is very small, and therefore the losses in the system can be minimized. If the losses are minimized, the efficiency of system increases, which is obviously a very important thing. Ideally speaking, we would like to use an efficiency of 100%. So yeah, that is the primary reason why we tend to send, or rather we tend to operate the bulk of our power system at high voltages. But we can't do that on the generation side because for these very large voltages, say 400 kV, 220 kV, the level of insulation required in a comparatively small equipment like a generator is enormously large. By the way, why is that not a problem for transmission lines? कोई कह सकता है? ये जो दो issues है ना आपके, ये insulation and size, they're obviously problems for generators. But if you operate at very large voltages, why aren't these equally problematic for transmission lines? कोई कह सकता है? Anyone? More हाँ, ओके. तो बेसिकली अगर आपने ट्रांसमिशन लाइन कोई देखी होगी, नंबर वन, देयर इज एक्चुअली फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन देयर इज नो इंसुलेशन. जो आपके कंडक्टर होते हैं ना, दे आर नेकेड, उनमें कोई प्लास्टिक कोटिंग नहीं है, कोई पेपर इंसुलेशन नहीं है. So the cost of insulation is minimal. The only cost of insulation is when the transmission line has to be supported. तो अगर आपने कोई ट्रांसमिशन लाइन कभी देखी होगी, उसमें हमारे पास वो टावर पीरियोडिकली होते हैं और उनसे ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन लटक रही होती है. अब ऐसा नहीं होता है लटकने का इक्विपमेंट, तो मैं कुछ रैंडम बना रहा हूँ.
ये जो आपके पास इंसुलेटर्स होते हैं, दे आर टिपिकली, ऑब्वियसली दे आर, द टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन इवॉल्विंग, बट क्लासिकली वी यूज व्हाट आर नोन एज सिरेमिक इंसुलेटर्स. अगर आप आज भी देखोगे, ट्रांसमिशन लाइन तो छोड़ो, अगर आप घर के बाहर भी देखोगे, आपने वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो उसकी तार होती है 11 kV की, वो भी वो सिरेमिक, पोर्सलेन, बोन चाइना जिसको कहते हैं ना, उसके इंसुलेटर की बनी होती है. बट दैट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन, जो आपके टावर्स होते हैं. बल्क ऑफ द सिस्टम जो आपका होता है ना, दैट इज ओपन एयर. द एयर इटसेल्फ इज एन इंसुलेटर. यहाँ जो बीच में एयर फ्लो होता है ना, that is an insulator, and air is obviously, there is no cost associated with air. It is a common good. आपको इसके लिए पैसे नहीं देने किसी को. So yeah, एक तो नंबर 2, आप उनके बीच में सेपरेशन बहुत हाई इंक्रीज कर सकते हो. So अगर आपने ट्रांसमिशन लाइंस देखी होंगी, वो ये नहीं है तारे जो होती हैं फेज ए, फेज बी, फेज सी, आर, वाई एंड बी जिसको हम कहते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय मेनी फीट. So इनके बीच की सेपरेशन डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज, मे बी इट कैन बी 10 feet, इट कैन बी 20 feet. तो बहुत काफी सेपरेशन आप रख सकते हो. इट कैन बी 30 feet. ये अफोर्ड कैसे आप कर सकते हो सेपरेशन? द रीजन इज द इंसुलेटर दैट यू आर यूजिंग इज एयर. एयर का कोई कॉस्ट नहीं होता है, इट इज मतलब फ्री. सो एनीवे, दैट इज द रीजन व्हाई we generate power at low voltage, but we send power at high voltage. Another thing would be that if you look at the transformer, at one end of the transformer, the voltage is very small. At the other end of the transformer, the voltage is very large. So a generator is an electrical machine. A transformer is also an electrical machine. ये दो problems जो आपके पास होती है ना, insulation cost and insulation size वगैरह, ये transformer की high voltage side पे apply नहीं होगा. Anyone? सवाल ये है कि जनरेटर में आपने माना कि मतलब 25 kV के ऊपर आप नहीं जा सकते, मैं अब तक 30 kV या समथिंग लाइक दैट. लेकिन ट्रांसफार्मर भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है. उसमें तो आपके ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो तो हवा में लटक नहीं रही होती है. आपने ट्रांसफार्मर घर के बाहर भी देखा होता है, उसकी एक टैंक होती है, उसका एक कोर होता है, उसको तेल में रखते हैं, ठीक है, उसकी बुशिंग्स होती है. तो ये जो प्रॉब्लम आपके पास है मतलब इंसुलेशन वगैरह का, वो यहाँ ट्रांसफार्मर के एचवी साइड पे अप्लाई नहीं होगा. एनीवन? हेलो, एनीवन? ओके, आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई ऑडिबल? होपफुली आवाज आ रही है. हेलो? यस सर, आवाज. हाँ, तो सवाल इसका जवाब. So it's very simple. Actually, it's not simple. It's somewhat complicated. जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ना, it is what's known as a static device. What is a static device? कोई बोल सकता है? नो रोटेशन. मुझे याद आ गया है to record. कोई बात नहीं. Turn on recording. Okay. So if you look at a transformer, exactly, there is no rotating part. The transformer is stationary. On the other hand, the generator obviously is not stationary. The generator is a moving equipment. इसमें एक रोटर होता है, वो घूमता है, ठीक है. उसको बॉल बेयरिंग्स पे आपको सपोर्ट करना होता है, स्टेटर होता है, उनके बीच में फ्लक्स लिंकेज कपलिंग होती है, बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं. बट ट्रांसफार्मर आपका जो होता है, it is completely stationary. Because of that, even though the same problems of insulation and insulation cost and size, etc., are also true for a transformer, they are much less a problem. Reason being, for example, आपका size बहुत बड़ा है, ठीक है, या आपने insulation की thickness बहुत ज्यादा है. आप imagine करो रोटर आपका घूम रहा है, एक तो उसको घूमना भी है, ठीक है, ऊपर से उसके ऊपर ये मोटी मोटी इंसुलेशंस भी उसके इर्द गिर्द है, तो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक. ऑन द अदर हैंड, ये जो आपके पास प्रॉब्लम है वो ट्रांसफार्मर में नहीं होती है. अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, मे बी आई विल ड्रॉ इट समवेयर हियर. ओके, यहाँ बना लेता हूँ. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर्ड पेन. ट्रांसफार्मर आसमान में नहीं होता है. इट इज समथिंग लाइक दिस. इट इज एनक्लोज्ड इन अ टैंक. उसमें आपके पास एक कोर कुछ होता है, मैं रफ बना रहा हूँ. उस कोर में आपने वाइंडिंग लगा के रखी होती है, एंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज सबमर्ज्ड इन ऑयल. इज दिस क्लियर? जब आप ट्रांसफार्मर देखते हो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स विद एक्सेप्शन ऑफ जो छोटे मोटे ट्रांसफार्मर आपके घरों में होते हैं, एवरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर. नाउ जो इंसुलेशन अकेले काम नहीं कर पाती है, वो इंसुलेशन प्लस ऑयल काम कर पाती है. इन अदर वर्ड्स,
अगर आप ट्रांसफार्मर को कंपेयर करोगे ना विद द जनरेटर, रिमेंबर जनरेटर आपका रोटेटिंग पीस ऑफ इक्विपमेंट है, इज दैट क्लियर? तो ये नहीं है कि आप तेल में उसको डुबा सकते हो समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इट इज मूविंग। ऑन द अदर हैंड द ट्रांसफार्मर इज स्टेशनरी, आपने इसको ब्रिम तक तेल डाल दिया, तो जो तेल प्लस इंसुलेशन है ना, वही एक्चुअली इसमें यहाँ कमाल कर रहा होता है। इज दैट क्लियर? सो द इंसुलेशन इन अ ट्रांसफार्मर इज नॉट सिंपली प्रोड्यूस्ड बाय दोज, नॉर्मली हम पेपर इंसुलेशन यूज करते हैं, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स होती है ना उनकी तारों के ऊपर लगा के होती है। That is not the sole provider of insulation. Actually, the insulation in a transformer is produced by a combination of oil plus paper. ये जो ऑयल होता है ना, इसका खाली ये काम नहीं होता, ये मतलब कूल करता है आपकी वाइंडिंग वगैरह को, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, that it also acts as an insulator. This luxury is not available in a moving equipment. अगर आपका जनरेटर भी होता ना स्टैटिक, फिर ये कोई जरूरत नहीं थी बीच में ट्रांसफर लगाने की। Is that clear? आप जनरेटर जनरेशन ही करते at 400 kV और डाल देते ट्रांसमिशन लाइन। But because almost all generators are moving bodies, this kind of simple construction is not possible there. ठीक है? So anyway, उसके बाद ट्रांसमिशन के बाद आपको होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। What is the difference between transmission and distribution? Anyone? Okay, voltage level कम होती है। So I will look at point number 1. The voltage falls. ठीक है? Any other difference? Sir, in we use bulk of power to transfer while also in distribution. Unfortunately, your voice has an echo. Can you repeat that? Sir, in transmission, bulk of power is transmitted, whereas in distribution, less power is transmitted. Okay, so if I look at any circuit, the power level of that circuit is small. Actually, yeah, these are the two major differences. There are other minor differences as well. So if you look at a transmission system, for example, this is a transmission line. Okay, once you reach at this point, you have a step down of voltage. Okay, again, the step down of a voltage is provided by a transformer. And after that, what was a single transmission line, basically on the low voltage side gets bifurcated, in fact more than bifurcated, it gets divided into multiple distribution lines. तो अगर आप इस transmission line का power P है, if I assume that the losses in the transformer are very small, अगर ये distribution lines आपकी 4 हैं, so every distribution line carries a power of P by 4, something like this. So basically, the quantum of power is basically larger, smaller rather, not larger. Again, ये क्यों हम करते हैं? Basically, जो आपका मतलब load consumption होता है ना, उसकी वजह से आपको distribution ऐसे करनी पड़ती है. So for example, if you look at Kashmir Valley, maybe somewhere in the north you have say Baramulla, Sopore, Bandipora, जो भी है, ठीक है? In the center you have say Srinagar and you have say Badgam, whatever, ठीक है? And in South Kashmir you obviously have Anantnag, you have Pulwama, you have Shopian, whatever, जो भी है आपके पास, ठीक है? So maybe this is a transmission line. Let's assume ये आपको श्रीनगर में पहुंच गई, ये है श्रीनगर, ठीक है? श्रीनगर के भी अगर आप इसको zoom in करोगे ना, you have multiple localities. So you have say starting from Sovra, going all the way to say Hyderpura, whatever. Different आपके पास areas हैं, different वहाँ पर homes हैं, different आपकी localities हैं, उन तक आपको electricity पहुँचानी है, एक single line से तो पहुँच नहीं सकती है। आप imagine करो, अगर सारे जो आपका श्रीनगर शहर होता है ना, ऐसा होता, instead of being spread out like this, अगर आपका linearly divided होता, मतलब imagine करो, मतलब ऐसा होता कि एक मकान होता, ठीक है, उसके सीध में एक और मकान होता, फिर एक और मकान होता, फिर एक और मकान होता, तब हमारा distribution network बहुत ही simple होता. But because that is not the case, if you look at one transmission line after being stepped down, whatever, and so on and so forth, it gets divided into multiple distribution lines. Is that clear? Okay. So yeah, these are the two important differences between distribution and transmission. Hopefully that's clear. And then we have finally load. What is load?
You can call it consumption, you can call it whatever, जो भी आप कहना चाहते हो. What is a load? Hello? So the energy requirement of a consumer. Yeah, but okay, that is also one meaning of a load, but here I'm using it as a it's a name of a device. Okay, it's a name of a component of a power system. Load is basically, load जो आपका होता है ना, it is any device which consumes electricity. ठीक है, consumes electrical power. ठीक है, load and consumer for me are synonymous. Is that clear? So आपके पास consumers कैसे होते हैं? For example, you can have industrial loads. You can have commercial loads. You can have domestic loads. ठीक है, जो आपके पास इंडस्ट्रियल लोड्स होते हैं उनका जो पावर लेवल होता है ना, इट इज वेरी लार्ज. सो आई विल कॉल दिस पावर लेवल इज वेरी लार्ज. ठीक है, पावर इज लार्ज. लेट मी यूज अनदर पेन. Again, what does large mean? Large का कुछ मतलब नहीं होता है. It is basically a point of comparison. The power level is very large compared to this power level, जो आपके पास commercially consume होता है. And again, it is larger compared to the individual power level of any domestic consumer. So let me try to explain this. ये जो आपके industrial loads होते हैं, for example, कोई factory बनी हुई है, ठीक है, या कोई प्लांट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई कुछ मतलब प्लांट है जहां पर मशीन्स आपके पास लगा के होती हैं, वहां पर एट वन लोकेशन अगर आप इसको ट्रीट करते हो ना एज एन एंटिटी, उसका जो पावर कंजप्शन है दैट इज इनॉर्मसली लार्ज, इट्स वेरी लार्ज. ऑन द अदर हैंड जो आपके पास कमर्शियल लोड्स होते हैं, कमर्शियल लोड हो गया फॉर एग्जांपल कोई सुपरमार्केट है, ठीक है, कोई दुकान है, कोई ऑफिस बिल्डिंग है, मे बी यू हैव सम काइंड ऑफ अ मॉल. Is that clear? You have some kind of a stadium, you have any kind of a concert hall or a movie theater. Those are all commercial loads. Is that clear? Is someone writing anything? ये टीम क्यों हो जाता है बीच में? Okay, no. Here, let me ignore this now. So those, all these things basically come under the heading of commercial loads. Then we have domestic loads. Domestic loads means आप और मैं. Is that clear? जो हम घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, that comes under the rubric, heading of domestic load. Now, if you look at the electricity consumption of a typical household, I'm talking about one home. It's typically very small. ठीक है? So maybe the net consumption, if I measure it in terms of power, the peak power demand of a typical home will not be more than, मतलब upper limit मैं कह रहा हूँ, maybe more than 8 or 9 kilowatt, maybe 10 kilowatt, not more than. अगर आप देखोगे इन ऑर्डर टू कंज्यूम पावर ऑफ 10 किलोवाट, क्या क्या आपको ऑपरेट करना है घर के अंदर. घर के अंदर हमारे पास गीजर होता है, जो सबसे बड़ा गीजर भी होता है, टिपिकली इट इज 2 किलोवाट. सो इट मींस दैट इफ यू वांट टू कंज्यूम 10 किलोवाट एट वन टाइम, you must have a home with 5 geysers and all 5 geysers have to be connected simultaneously. ठीक है? So for example, if you have 5 geysers at your home and you're only connecting 2, your power consumption is not 10 kilowatt, it's only 4 kilowatt. या आपके जो heating equipment होते हैं, so if you look at a typical blower, it has different levels of power consumption. It can consume 1 kilowatt rather, that is 1000 watt. It can consume 2000 watts. So in order to have a load of 10 kilowatts, one home has to simultaneously operate 10 convectors, something like that. Rather, sorry, not 10, 5 convectors. So anyway, जो आपका domestic load होता है ना, it's usually smaller than 10 kilowatt, something like that. On the other hand, जो आपके पास commercial loads होते हैं ना, it can vary, but I'm talking about say maximum value. It is maybe few hundreds of kilowatts, maybe around that figure. तो आप इमेजिन करो कोई आपके पास मॉल है फॉर एग्जांपल, उसमें बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है, उसमें लाइटिंग बहुत सारा आपको यूज करना है, उसमें लिफ्ट्स इंस्टॉल करके हैं, उसके अंदर एलिवेटर्स हैं, ठीक है, उसमें आपके पास डिस्प्लेस लगा के होते हैं. उनकी आपकी पावर कंजप्शन अगर आप ऐड करोगे ना, मे बी फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट्स, समथिंग लाइक दैट. मतलब टिपिकली जो आपका पीक डोमेस्टिक कंज्यूमर है उससे मे बी 50 टाइम्स या 100 टाइम्स आता है.
On the other hand, if you look at industrial consumers, the power consumption is in megawatts. ठीक है, mega means 1 million. In other words, 1 megawatt is 1,000 kilowatts. So जो आपके पास industries होती हैं, for example, यहाँ तो कश्मीर में उतनी industry नहीं है, but you have a little bit of industry in Rangret, for example. You have typically an enormous amount of power consumption there. If you go outside of the state and look at, say, the manufacturing plants operated by, say, Suzuki or Mahindra or any of these automotive industries or manufacturers, the power consumption of one plant may be 10 megawatts or 20 megawatts. It can be enormously large. Is that clear? It can even be larger. It can be 100 megawatt. Basically depends. So ये जो आप power इनको provide करते हो ना industrial loads को, because the power level is very large. Remember, in order to provide a given amount of power, if I increase the voltage, the current requirement is smaller. So if the power requirement is very large, the voltage that at which you are going to provide this, it can't be small. Is that clear? ये जो आप voltage होती है ना जिस पे आप industrial loads को supply करते हो, वो typically बहुत large होती है. It can be 33 kV, it can be 11 kV, it can sometimes also be 66 kV, depends. ठीक है? Again उसका क्या मतलब है 33 kV, 11 kV? जो line आती है ना इनके पास industrial loads के पास, वहाँ पर power आप send करते हो 33 kV पे, ठीक है? फिर उसको फिर locally आप step down कर सकते हो जो आपका industrial consumer होगा, so on and so forth. But typically ये बहुत large voltage पे आप generate करते हो, sorry, send करते हो उसको. If you compare that with a commercial load, for example, our university is a commercial load. आपके पास एक dedicated 11 kV यहाँ पर line आती है, ठीक है? So it can also be at provided at lower voltages obviously. So for example, आपके मतलब जो malls वगैरह होते हैं उनको कोई dedicated 11 kV line नहीं आती है. You are providing them at 400 volts जो 3 phase होता है. जो आपके domestic loads होते हैं, अगर आपने देखा होगा, जो घर के बाहर का ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो high voltage side होती है ना, उस पे 11 kV आ रही होती है. But that 11 kV is never available to you. आपके पास जो voltage आती है, that is always उसकी 3 phase अगर आप value देखोगे, that is around 400 volts. And even you are not going to get that 3 phase voltage. आपके पास जो पहुंचती है, that is single phase voltage. In other words, line voltage नहीं मिलती है, phase voltage मिलती है, which is 400 divided by root 3, which is around 200, 240 volts, something like that. So these are some important differences between the different kinds of loads which we have to keep in mind. Industrial loads की voltage level बहुत high होती है and quantum of power भी बहुत high होता है. Why is that important? We shall come to that maybe after a few lectures. So anyway, this is about power systems. Hopefully आपको ये थोड़ा revise हो गया होगा. Now the next step obviously is what we have to study here, that is protection. What is protection? कोई कह सकता है? Anyone? Protecting the system from abnormalities. मतलब कोई example आप दे दो, what is an abnormality? Fault is an abnormality. Okay. So we are protecting the system from the fault. वही आप कह रहे हो? Okay. Anyone else? कोई और है? हाँ बोलो क्या सर्ज सर्जेस ओके मतलब ये तो वर्ड है ना कोई सेंटेंस बनाओ ना इसको मतलब सर्जेस से क्या मुराद है नहीं वो मुझे पता है सर्ज क्या हुआ लेकिन मतलब प्रोटेक्शन और उससे क्या लेना देना है हेलो Hello, am I audible? Yes, sir. So protection against surges. Okay, protection against surges. Okay, surges के खिलाफ protection. Is that clear? So okay, without wasting time, actually this is a bit of a misnomer. ये जो आप मतलब use करते हो ना word protection, आम बोलचाल में जो लफ्ज़ protection है, and जो मतलब technical यहाँ पर इस्तेमाल हम कर रहे हैं इस word को, there is a I mean, it is a slight difference between the two. So the first guy,
he talked about faults, right? We have faults and we are trying to protect against those faults. Actually, that is a bit of a mistake. Mistake भी नहीं कह सकते. It is obviously that's बात आपको कहाँ पता है. But actually, you are not protecting against faults. You are protecting against the consequences of faults. ठीक है? थोड़ा ये fine एक point है. I will probably write it down somewhere. The protection is not against faults. It is against the consequences of faults. For example, घर के अंदर हमारे पास एक simple protective devices होते हैं जिनको हम कहते हैं fuses. Hopefully आप सबने देखा होगा. A common kind of a fault in any piece of electrical equipment is a short circuit. If there is a short circuit through any device which is being fed through a fuse, the fuse melts. And because it melts, it basically disrupts the current flow and therefore the current flow disappears through the device. So the negative consequences of a short circuit can be avoided. But as such, वो short circuit के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता. Fuse ये नहीं कर सकता कि short circuit आ गया आप उसको हटा सकते हो fuse के जरिए से. That is not possible. Short circuit के असर को आप हटा सकते हो. Is that clear? But short circuit को fuse कुछ नहीं कर सकता. Is that clear or not? So I will repeat. Protection is क्या मैं इस्तेमाल करूँ? It is a kind of a medicine as opposed to a vaccine. What is the difference between vaccine and say medicine? They are both, I mean, obviously vaccine is also medicine, but aam bol chal mein we make a distinction between a vaccine and a cure. Now, vaccine means, for example, अगर किसी को COVID vaccine मिल गया है, तो COVID उसको कुछ नहीं कर सकता. Is that clear? On the other hand, अगर किसी को COVID हो गया है, उसको हम दवाई देते हैं. तो कोविड के जो बुरे असरात हैं उससे बचाते हैं, लेकिन कोविड तो हो गया ना. So again, I will repeat, this protection is not, this would be something akin to a vaccine. A power system protection does not vaccinate against faults. It cures the negative consequences of the faults. In fact, it prevents the negative consequences of a fault. ठीक है, जहां तक मुमकिन होगा. What are the negative consequences of faults? Actually, बहुत सारे negative consequences हैं. आपको आग लग सकती है, heating हो सकती है, आपका system collapse हो सकता है, generators मतलब टूट सकते हैं, ठीक है, transformers आपके जल सकते हैं, and so on and so forth. These are consequences of faults. I will repeat, which you are trying to protect against. The faults by themselves are not something that you deal with explicitly or we deal with them explicitly, but उनको कैसे prevent करना है in the sense कि fault हो ही ना. That is not a part of power system protection. Is that clear? So let us go back to the slides. Okay. So electrical energy, as you can see, it is generated at small voltage, transmitted at high voltage, and then it is stepped down and distributed at load centers. ठीक है? This is an important sentence. Natural mode of synchronous operation knits the system together. कोई मुझे कह सकता है what is synchronous operation? Anyone? For example, अगर different systems को connect करते हैं, they should be connected at the same frequency. हाँ. So if you have a generator here, ठीक है, and you have some generator here, and there is some load here, for example, उनके बीच में आपने transmission line लगाई. It's simple एक system है. Because of the generator, some frequency is produced here. It is say 5 F1, and because of this generator, the local frequency is F2. Let's assume ये जो आपका generator है ना, it is producing 100 megawatt. ये जो आपका generator है, it is say producing 50 megawatt. ठीक है? And let's assume this load is 100 megawatt. Rather, let's assume it's 150 megawatt. So what will happen? Let me use another marker. This 50 megawatt is supplied to this load. But as you can see, this generator can only generate a power of 50 megawatts. The load consumption is 150 megawatt. What is the deficit? बाकी कितना बचा? Anyone? 100 है ना? So ये 100 कहाँ से आ रहा है? It is being supplied by this generator.
through this transmission line. ये आपके पास transmission line है. In other words, if I look at the system from the point of view of this bus, ये जो आपके पास ये location है, 50 megawatts are flowing into this bus and 100 megawatts are flowing into this bus, and then cumulatively 150 megawatt is flowing into this load. Is that clear? Now, unfortunately, in fact, fortunately or unfortunately, this power flow between this point, let's call this A, and this point, let's call it B, is impossible in the long run unless and until these frequencies are the same. Is that clear? अगर आपने AC power flow करना है unidirectional from point A to point B, आप चाहते हो कि नहीं मुसलसल 100 megawatt यहाँ flow हो. That is impossible if the frequencies are different. The frequencies, ideally speaking, should be the same. Practically speaking, they can be close by. थोड़ा minus 0.1% अगर ऊपर नीचे होगा, that's okay. Is that clear? In other words, if this frequency is 50 hertz and this frequency is 50 hertz, then we are happy. On the other hand, if this frequency is 50 hertz and this frequency is say 59 hertz or 52 hertz even, that is not acceptable. Is that clear? So ये basically यहाँ पर है slide में लिखा हुआ natural mode of synchronous operation knits the system together. Knits का मतलब है system को operate कराता है, power flow कराता है from point A to point B. That is only possible when we have synchronous operation. जो भी आपकी grid के अंदर typically synchronous motors और synchronous generators होते हैं, they should ideally speaking operate at the same electrical speed, 50 hertz. Is that clear? Again, it is something that you have to work on in the sense कि ये खुद ही नहीं होता, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ती है. So anyway, let's move on. Okay, this is a simple map of western region of India. This is the state of maybe this map is a bit obsolete, but it basically gives out the flavor of what it is that we can expect. This is the state of Gujarat, and this here is the state of, I guess, Maharashtra. Perhaps this is the state of Madhya Pradesh, and I don't know, perhaps this is Chhattisgarh. So these red lines that you can see, these are basically the transmission lines that are present in the system. अगर आप देखोगे ये जो generating sites है आपके system में blue color के यहाँ पर दिए हुए हैं, blue color के अगर आप dot देख सकते हो, maybe I should use a pen. Moment. Okay. So you have these are some locations where electricity is generated. Maybe electricity is generated here, and electricity is generated here, and electricity is generated here. But as you can see from these sites of generation, we have these transmission lines radiating out. ये transmission line यहाँ जा रही है, ये transmission line यहाँ जा रही है, and so on and so forth. बड़ी complicated तरीके से. अगर आप देखोगे from this source of generation site, you have at this point multiple transmission lines connected to it. एक transmission line ये है, then you have another transmission line, then you have a third transmission line. All of these are connected to a single generator. Is that clear? At this point, you have 1, 2, 3, and 4. 4 transmission lines are converging to a single bus, actually to a single power station, and then diverging away from each other. So even a simple example, अगर आप देखोगे ये खाली मतलब वेस्टर्न इंडिया है, अब तो आपको इंडिया में सिंगल ग्रिड बन गया है. यहाँ पर हम खाली 4 स्टेट्स की बात कर रहे हैं. जस्ट थिंक ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्ड फॉर द एंटायर इंडिया. इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? कुछ 25-26 तो है, मतलब 28 हैं, जो भी है. Here we are only talking about maybe 3 or 4 states. Look at the level of complexity involved. Again, the question is, why do we have generators here? The answer is very simple. Most of the generation even today, with all the talk of renewable energy and photovoltaic system and so on and so forth, and you know, क्या हम utilize करेंगे wind energy or hydro power. The bulk of electricity in India still comes from coal-based power plants. जो coal आपका होता है ना, वो uniformly distributed नहीं है. For example, in the state of Kashmir, there is hardly any coal. The same is true for, say, a state like Punjab or Haryana or Himachal Pradesh or Uttarakhand or whatever, Rajasthan. The coal deposits in India are very asymmetrically distributed. So, for example, you have a coal deposit here in eastern Maharashtra. You have a coal deposit here. This probably is Jharkhand, I guess. It's in fact not even a part of the state. You have coal deposits somewhere here in Orissa or somewhere. ठीक है? So जहाँ पर coal deposit होता है वहीं पर आप power house बनाते हो, coal based power house. वजह क्या है?
अदरवाइज ये जो कोल है ना, इसको आपको वो ट्रेन पे डाल के किसी और लोकेशन पे लाना है। कभी ट्रेन चलती है, कभी ट्रेन बैठती है, ठीक है, कभी लोग सड़कों पे आते हैं, ट्रेन बंद करते हैं, तो वो रिलायबिलिटी इश्यूज में हो जाता है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट in almost all cases we try to build coal based power plants close to the location, close to the coal fields. Is that clear? जहां पर कोयला आपको माइंस में मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो इलाके हैं ये बहुत ही अंडर डेवलप्ड इलाके होते हैं टिपिकली। सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट से झारखंड और ईस्टर्न महाराष्ट्र, दिस रीजन बाय द वे ईस्टर्न महाराष्ट्र इज ये बहुत ही फेमस है। अगर मूवी वगैरह आप देखते हो, ये जो फार्मर सुसाइड्स वगैरह यहीं पर हो रहे होते हैं, इसको शायद विदर्भा कहते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी पुअर रीजन, लोगों के पास पैसा नहीं है, मतलब बहुत ही मुश्किलात है वहां पर, सूखा इलाका एंड ऑल दैट, because of which a very substantial number of people have committed suicide because of the pressure of debts and all that. So यहाँ पर local consumption क्या है, कोई industry नहीं है, ठीक है, कोई बड़ा शहर नहीं है, लोग भी जो है वो गरीब है, तो उनके पास उतने electrical devices नहीं है, तो domestic consumption भी कम है। On the other hand, if I look here, this is Mumbai by the way, I guess, या तो ये है या तो ये है, but anyway, either of the two, probably this one here. Now, Mumbai, for example, if you include the satellite townships of Thane and Navi Mumbai and all that, the population probably is somewhere in the vicinity of 2 or 3 crores or something like that. That is, population of Kashmir is 70 lakhs. So it is maybe 6 times, or not 6 times, maybe 4 or 5 times larger than the population of Kashmir. All of these are confined to this very small geographical area. Agar aap dekhoge, area wise, it is maybe not even 5% of the net area of Maharashtra. बट महाराष्ट्र का 1/3 पॉपुलेशन इस छोटे एरिया में रहता है, एंड पॉपुलेशन तो छोटा, पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। इज समवन राइटिंग एनीथिंग? अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, प्लीज एल्यू स्टूडेंट्स। नो, स्टूडेंट्स कांट बी एल्यूड क्योंकि इस वक्त खत्म होने वाला है क्लास, अभी तक कहाँ थे। एनीवे, if you look at this region here, we have Mumbai. As you know, Mumbai is city of dreams and all that. तो वहाँ पर local power consumption बहुत ज़्यादा है। उसके आसपास आपको थाने वगैरह है, वहाँ बहुत सारे industries हैं। मुंबई के अंदर बहुत सारे offices हैं, for example. So the power consumption is very large here. But if you look at the source of power, maybe with the exception of this point here, almost all power comes from far away, maybe hundreds, और ये तो छोटा सा इलाका आपको दिख रहा है। Remember, this is Maharashtra. And then you have Madhya Pradesh, and then you have Jharkhand. Is that clear? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी separation है ना between these 2 points, it probably is greater than the distance between क्या कहते हैं इसको, Srinagar and say Jammu, or Srinagar and Amritsar, maybe Srinagar and Delhi. This distance here is probably 1,000 kilometers, maybe 1,500 kilometers. So all of this power has to be sent through transmission lines, which is an important point. So why do we need protection? When we have abnormal fault operating conditions, abnormal operating conditions can be, we can have a fault, we can have overloads, we can have many other things जो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे. Protection is necessary for safety of electrical equipment and safety of human personnel. Again, इसने sentence लिखा है safety of electrical equipment. It is a very complicated thing. Safety के बहुत सारे पहलू होते हैं. In the same way, safety of human personnel. आपको पता है, for example, आप safe कब हो गए? मेरी आंख बच गई तो मैं safe हूँ, मेरे हाथ बच गए तो मैं safe हूँ, मेरी टांग नहीं कटी तो मैं safe हूँ, मुझे आग नहीं लगी मैं safe हूँ, मुझे शॉक नहीं लगा तब भी मैं safe हूँ। Is that clear? So even human safety is very complicated. इसके बहुत सारे types होते हैं. In the same way, safety of electrical equipment is in fact sometimes more complicated than safety of human personnel. We have to study all of this in detail. But remember, again, this is safety of electrical equipment can be compromised by abnormal operating conditions. Abnormal operating conditions को आज खुद आप कुछ नहीं कर सकते. उनके जो असरात हैं on the safety of electrical equipment, that is something that we deal with here. So okay, so we have types of protection. We have first of all, let's look at the first one, apparatus. Apparatus is simply a complicated way of saying component, device, हिस्सा, ठीक है, जोज। सो आपके पास जो मतलब पावर सिस्टम के बहुत सारे apparatus होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सो यू हैव ट्रांसमिशन लाइंस, उनकी प्रोटेक्शन आपको करनी है, ट्रांसफार्मर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करनी है, जनरेटर है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है, देन मोटर एंड बस बार।
तो ट्रांसमिशन लाइन जो आपका होता है ना, वो मतलब हो सकता है उसका एक फेज शॉर्ट आउट हो गया, ठीक है, किसी ने कहा अभी वो सर्ज वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, उससे उसकी इंसुलेशन जल सकती है, अगर उसको हमने परसिस्ट होने दिया। ट्रांसफार्मर में आपको हो सकता है तेल लीक आउट हो गया, हो सकता है ओवर हीटिंग हो गई तो लोकल आग लग गई, हो सकता है फेज अनबैलेंस है, उससे आपका जो ट्रांसफार्मर की जो टैंक होती है आगे हम देखेंगे वो ओवर हीट हो सकती है। मे बी जो आपके पास ऑयल लेवल है वो फॉल हो गया, हो सकता है ऑयल आपका इवेपोरेट हो गया। 1001 थिंग्स कैन गो रॉन्ग, ठीक है। इन द सेम वे जो आपका जनरेटर होता है, हो सकता है उसकी एक्साइटेशन फेल हो गई, हो सकता है उसका जो रोटर है उसकी बेयरिंग टूट गई, हो सकता है जो उसकी आर्मेचर वाइंडिंग है वो ओपन हो गई, हो सकता है कि आर्मेचर वाइंडिंग की जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो फेल हो गई। So million things can go wrong. In the same way, if I look at motors, I mean, there are many kinds of motors, but here we shall mostly be looking at synchronous motors and induction motors. Okay. Synchronous motors basically face the same kind of problems as synchronous generators. Induction motors can face some other issues as well. ठीक है, हो सकता है जो आपका रोटर बार है वो ओवरहीट हो गया, हो सकता है मोटर आपका स्टॉल हो गया। घर के अंदर आपने देखा होगा जो आपका इंडक्शन मोटर होता है ना, जो आप पंप में यूज करते हो, घर के अंदर जो मोटर होता है ना, इससे पानी ऊपर चढ़ाते हैं। इफ इट इज ऑपरेटेड एट लो वोल्टेज, टिपिकली क्या होता है, मोटर जल जाता है। द सेम इज ट्रू फॉर दीज लार्ज इंडक्शन मोटर्स दैट वी यूज इन इंडस्ट्री। व्हाट इज अ बस बार? कोई कह सकता है व्हाट इज अ बस बार? It is? It is a node used in a power system. That is bus, but I am specifically talking about, सही आपने कहा बस उसको कहते हैं, बट यहाँ स्पेसिफिक है व्हाट इज अ बस बार। बस बार से ही बस बनती है, इज दैट क्लियर? ठीक है, जो आपने नोड वगैरह देखा है ना, वो तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है। देखो क्या होता है, मे बी आई विल गो बैक टू द जैम बोर्ड। सो लेट्स यूज अ ब्लैक। ये आप यहाँ पर भी अगर कभी देखोगे, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के अंदर या घरों के अंदर भी, वहां पर वो कॉपर के स्ट्रिप्स जैसे होते हैं, यहाँ पर तो छोटे से कॉपर से स्ट्रिप्स होते हैं। ये जो कॉपर के स्ट्रिप्स होते हैं ना, इन्हीं से आप अपने तारों का कनेक्शन जोड़ते हो। सो दे आर स्ट्रिप्स, दे आर शेप्ड लाइक बार्स, they connect, they are basically points of connection of various lines or various wires, hence the word bus bar. Is that clear? बार का मतलब होता है स्केल के शेप का, या मतलब कोई चपटा सा कोई शेप होगा। सो इन द सेम वे अगर आप किसी पावर जो आपके पास स्टेशन होता है, रिसीविंग स्टेशन आप जाओगे, या ट्रांसमिशन लेवल का कोई सब स्टेशन होगा, वहां पर आप देखोगे ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर क्यों होता है, क्योंकि आप यूजुअली वोल्टेज स्टेप डाउन स्टेप अप कर रहे होते हो, ऑन दिस साइड एज वेल एज ऑन दिस साइड। ये जो आपके इक्विपमेंट होते हैं ना, मतलब स्टेशन के अंदर, वो डायरेक्टली आप कनेक्ट नहीं करते ट्रांसफार्मर के साथ, आप बीच में बस बार्स लगाते हो, ठीक है। सो इनकी प्रोटेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। हम देखेंगे मतलब देयर सम स्पेसिफिक इश्यूज व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बस बार्स, जब इंशाल्लाह वहां पहुंचेंगे तब वो उठाएंगे। Then this is basically apparatus protection. आप ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या मोटर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। The next step obviously is system protection. System means ये पूरा का पूरा जो निजाम है ना, पूरा का पूरा सिस्टम, उसको as a unit आप ट्रीट कर रहे हो, फिर उसको आप मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हो। As a unit का क्या मतलब है? For example, I will give an example. आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आई एम स्टेयरिंग एट द स्क्रीन, आप तो मेरा चेहरा नहीं देख सकते, बट आई एम यूजिंग अ कंप्यूटर ग्लास। अगर आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर ग्लास का थोड़ा वो ब्लूइश ह्यू होता है, आई एम टॉकिंग ऑफ माय स्पेक्टिकल्स है, उसकी वजह से कि आपको जो ग्लेयर होता है ना लैपटॉप का, वो थोड़ा कम आ जाता है। सो दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ माय आईज, ठीक है। इन द सेम वे मुझे ठंड लगती है तो मैं फॉर एग्जांपल थर्मस लगाता हूँ विंटर के अंदर, इट्स प्रोटेक्शन ऑफ माय बॉडी टेम्परेचर और व्हाटएवर। मैं ड्राइव करूंगा, अब मैं अपना सर बचाने के लिए, आई एम ड्राइविंग अ मोटर बाइक, आई एम गोइंग टू यूज अ हेलमेट और समथिंग। बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर सिस्टम वाइड। पूरे ह्यूमन बीइंग की प्रोटेक्शन की बात अगर मैं करूंगा, उसकी भलाई की बात करता हूँ, तो कुछ हमारे पास वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द सिस्टम को असर कर सकते हैं। उनको आप थ्रू आउट द सिस्टम एज अ प्रॉक्सी यूज कर सकते हो कि सिस्टम की इस वक्त मौजूदा हालात कैसे हैं। इज द सिस्टम हेल्दी, इज इट अनहेल्दी, इज इट इन डेंजर? उनको यूज करके आप सिस्टम की प्रोटेक्शन का डिसीजन कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इज फ्रीक्वेंसी। इनफैक्ट ये जो सारे यहाँ एग्जांपल्स है ना, इन वन वे और द अदर दे आर ऑल रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी।
द अदर इज व्हाट इज नोन एज पावर स्विंग। थोड़ा बहुत मैं आपको समझाऊंगा पावर स्विंग क्या होता है। पावर स्विंग बेसिकली होता है कि आपके पास कोई दो पॉइंट्स है ना पावर सिस्टम, अगर पावर ऑसिलेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कभी पावर यहाँ जा रहा है और कभी पावर यहाँ जा रहा है, या अगर पावर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसमें कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ स्विंग। स्विंग का मान ले, स्विंग का मतलब होता है झूला, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकती है बट यूजुअली फ्रीक्वेंसी गिरती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने देखा हमको अंडर फ्रीक्वेंसी रिलेज यूज करने होते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है, आगे हम देखेंगे कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं दे आर इन डेंजर ऑफ बेसिकली बर्निंग आउट बिकॉज ऑफ सैचुरेशन। क्यों होता है, इंशाल्लाह विल गो देयर। आइलैंडिंग सिस्टम्स, व्हाट इज एन आइलैंड, कोई कह सकता है व्हाट इज एन आइलैंड? बाकी भूल जाओ आप, आइलैंड क्या हुआ आम बोलचाल में? आइसोलेटेड, आम बोलचाल में आइलैंड, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड, इंडिया इज नॉट एन आइलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर आइलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया क्यों आइलैंड है? So surrounded by water on four sides. तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया है ना दैट इज आइसोलेटेड इन द सेंस कि उसको किसी और लैंड के साथ कनेक्शन नहीं है। तो हमारे पास पावर सिस्टम होता है ना, ये एक सिंगल होल है। फॉर एग्जांपल एट द मोमेंट मोर और लेस जो आप मे बी फॉर एग्जांपल आप ये मेरा लेक्चर देख रही हैं ऑन अ लैपटॉप, ठीक है, और मे बी whatever on a mobile phone, but let's assume you are watching it on a laptop which in turn is being charged using a charger that you have connected to the supply. So your laptop is automatically a part of an enormous system known as the power system, जो कश्मीर से वो घिसा पिटा मुहावरा नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है कनेक्टेड। इनफैक्ट बियॉन्ड दैट भूटान नेपाल वगैरह के साथ भी कनेक्शन है उस पावर सिस्टम का। इज दैट क्लियर? सो कभी कभी ये होता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, आप चाहते तो हो कि ये सिंगल सिस्टम रहे, लेकिन कभी कभी ना मतलब ऐसे हालात हो जाते हैं कि आपको उसका बंटवारा करना पड़ता है। 1947 में इंडिया क्या था उसका नाम, एक कंट्री थी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वी हैड टू पार्टीशन इट इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। Now, obviously, ideally speaking, it should be a single country, but हालात ऐसे हो गए थे that partition was inevitable. In the same way, if I look at a very large system like a power system, usually speaking, we would like to operate it as a single unified system, ठीक है? But कभी-कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि आपको इसको हिस्सों में ऑपरेट करना पड़ता है। उन हिस्सों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, उनको इसलिए उन हिस्सों को हम आइलैंड्स कहते हैं, ठीक है? ये पानी बीच में नहीं है। बेसिकली अगर आपके पास ये पावर सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल मे बी आई विल draw it somewhere here. Okay, I'm out of time, but I can use this. ये आपके पास पावर सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोड्स कनेक्टेड हैं, यहाँ पर कुछ लोड्स कनेक्टेड हैं और उनके बीच में ट्रांसमिशन लाइन है। अगर ये ट्रांसमिशन लाइन हट गई ना, ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है। एंड देन फाइनली we have what is known as rate of change of frequency relay. This is very important. ROCOF relay इसको कहते हैं। अगर यह है कि फ्रीक्वेंसी कम होगी ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा नहीं हुई लेकिन अचानक बढ़ने लगी या अचानक घटने लगी, तब ये रिलेज मतलब तब ये सिस्टम आपका ऑपरेट होता है। तो एक्चुअली मैं इस तरह था, मैं आपको पॉइंट 2 भी आज स्टार्ट करूंगा, बट मे बी विल कंटिन्यू दैट विद द नेक्स्ट क्लास क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। हेलो, इज देयर एनी क्वेश्चन? If there isn't any question, we will inshallah meet in tomorrow's class, ठीक है?